Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss cross product or vector product. Okay, so when when two non-zero vectors are multiplied, there are two methods. That is, one is dot product and another one is cross product. If the result is a scalar, then it is called scalar product. Okay, and if the result is a vector, then it is called dot product or cross product. Okay, now this is vector A and this is vector B, and here vector A and vector B are two non-zero vectors. Okay, and if theta is the angle between them, okay, if theta is the angle between them, let vector A and vector B are two non-zero vectors, and theta is the angle between them. Theta is the angle between them. Okay, then cross product or vector product. Cross product को हम vector product भी करूँगा. Cross product between vector A and vector B, between vector A and vector B, okay, is defined as vector A cross vector B. It is denoted by vector A cross vector B. Okay, equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B and sin theta, sign of angle between them, and the direction of vector A cross vector B is given by n cap. Okay, n cap, where n cap is a unit vector. N cap is a unit vector perpendicular to both vector A and vector B. Both vector A and vector B. अब हमें कही पारिबा n cap is a unit vector perpendicular to plane containing vector A and vector B भी कही हो. Okay, so where n cap is a unit vector perpendicular to both vector A and vector B, or n cap is a unit vector perpendicular to plane containing vector A and vector B. That means vector A और vector B co-planar vector है. दुईटी vector always co-planar, so that ए दुईटी vector जो प्लेन ऊपर रहिबे सेही प्लेन को n cap टा कोन करबो परपेंडिकुलर करबो. अब n cap रो मैग्नीट्यूड केते 1. ओके, एंड हियर vector A, vector B and n cap form a right-handed system. Form a right-handed system.
right handed system means what? This is vector A, okay, and this is vector B, okay, and theta is the angle between them. Now right handed system means आमे जदि राइट हैंडेड, ओके, राइट हैंड को जदि आमे वेक्टर ए रे रखी कि जदि आमे क्रॉस करबा, ओके, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मींस व्हाट? वेक्टर ए टू स्टार्ट करे कि वेक्टर बी पर्यंत कोन करबा? क्रॉस करबा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ओके. सो दिस इज वेक्टर ए. वेक्टर ए टू स्टार्ट करके जदि आमे वेक्टर बी पर्यंत जदि क्रॉस जदि करिबा, जदि हमर ए चारोटी फिंगर को जदि कर्ल करिबा, ताहले हमर जो थंब रो डायरेक्शन टा जो अछि, ओके, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, ओके. हियर द राइट थंब ऑफ राइट हैंड इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एन कैप. अगेन दिस इज वेक्टर ए. वेक्टर ए टू स्टार्ट करके जदि मु वेक्टर बी पर्यंत जदि क्रॉस करूची, ताहले ए थंब रो डायरेक्शन टा हो कोन? एन कैप. ताहले वेक्टर ए आ वेक्टर बी जो प्लेन ऊपर अछंती, एही प्लेन को दुईटी वेक्टर परपेंडिकुलर करिवो. गोटिए वेक्टर जोटा की एही प्लेन, दिस इज ए ग्रीन बोर्ड, ओके. एही ग्रीन बोर्ड होची गोटे प्लेन, आउ प्लेन ऊपर वेक्टर आ वेक्टर भी अछि, ओके. ताहले एही प्लेन को जदि परपेंडिकुलर करबो, ताहले गोटिए वेक्टर एही ग्रीन बोर्ड रो फॉरवर्ड डायरेक्शन रे आसीबो, बाहर को आसीबो, ओके. किंबा ए ग्रीन बोर्ड रो पछपटे, दैट इज बैकवर्ड डायरेक्शन, ता माने पछ डायरेक्शन दे के जीवो. यार जस्ट ऑपोजिट, ओके, एही मार्कर रो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, यार backward direction, and this is forward direction, and these two vector are perpendicular to this plane containing vector A and vector B, okay. So here हमें एही वेक्टर को एटा, because this is a two dimensional geometry, so that हमें जो मार्कर जो डायरेक्शन टा अछि, जोटा कि वेक्टर A और वेक्टर B सहित परपेंडिकुलर अछि, ताकू हमें एही भलिया डायरेक्शन देछि, ओके. This is the direction of forward direction, okay. This is the direction of forward direction. Now जेतेले हमें वेक्टर A टू वेक्टर B को हमें जेतेले क्रॉस करूछे, हमरो थंब रो डायरेक्शन टा कोन? फॉरवर्ड डायरेक्शन रे आसी, ओके. दैट मींस आगो को आसी, ए ग्रीन बोर्ड रो फॉरवर्ड डायरेक्शन रे आसी, ताहले ताकू हमें डिनोटेट करिछे ई भलिया, ओके. Now this is n cap. So here vector A, vector B and vector B and n cap form a right-handed system, okay, form a right-handed system. Now this is vector A cross vector B equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B sin theta n cap, where n cap is the unit vector perpendicular to both vector A and vector B, or n cap is a unit vector perpendicular to plane containing vector A and vector B. Now next important point होची suppose this is vector A and this is vector B and this is n cap, okay. Now मु कोन करली 2 n cap रे 2 टे मल्टीप्लाई जदि मु करबी, ताले 2 n cap रो डायरेक्शन टा कोन होबो? दिस इज वेक्टर A and this is vector B. ताहले n cap रो 2 गुणा
that means eta positive sign अछि, that means like vector hobo, that means same direction re rohibo. This is n cap suppose, and this is another n cap, this is 2n cap. Okay, this is 2n cap. So this 2n cap vector is parallel to this n cap. Okay, now if it is vector A and it is vector B, and suppose this is n cap. Now जदि मु 3n cap बाहर करिबी ताहले कोन हबो, this is vector A and this is vector B, and this is n cap, 2n cap and 3n cap, and having this 3n cap and n cap are what, parallel to each other. Okay, तो हमें जानिले कोन n cap गोटे वेक्टर अछि, this is vector A, this is vector B and this is n cap. जदि हमें 2n cap जेते बेले हमें 2 टे जेते ले गोटे स्केलर क्वांटिटी जेते ले हमें n cap रे मल्टीप्लाई करू छे, ताहले से सेम डायरेक्शन रे रहि कि तार 2 गुणा होछि. ओके, जेते बेले हमें 3n cap रे मल्टीप्लाई करू छे, तार मैग्नीट्यूड 3 गुणा बढ़ी कि डायरेक्शन दा सेम होछि. ओके, नाउ पॉइंट इज दैट जदि this is vector A, this is vector B and this is n cap. Okay, जदि मु गोटे स्केलर this is AB sin theta जदि मु n cap रे मल्टीप्लाई करू छी, AB sin theta means what, गोटे स्केलर A, magnitude of A is a scalar, magnitude of B is a scalar and sin theta is also scalar. So AB sin theta हे जो कोन गोटे स्केलर, आ जे स्केलर टा जे हम n cap रे मल्टीप्लाई करू छे ताहले एही n cap रो मैग्नीट्यूड टा कोन हबो, AB sin theta हे जिवो, AB sin theta n cap. This is AB sin theta n cap, किछि तो मैग्नीट्यूड आसीबो. ओके, AB sin theta किछि मैग्नीट्यूड आसीबो जोटा कि n cap रो डायरेक्शन सहित समान हबो. AB sin theta n cap रो वैल्यू टा कोन n cap रो डायरेक्शन सहित समान हबो. But AB sin theta n cap रो वैल्यू टा कोन, this is vector A cross vector B. Okay, this is vector A cross vector B. तो हमें जानिले कोन जे n cap सहित vector A cross vector B टा parallel होछि. Okay, so here n cap is perpendicular to vector A. So vector A cross vector B is perpendicular to vector A. Now n cap is perpendicular to vector B, so vector A cross vector B is perpendicular to vector B, because vector A cross vector B and n cap are parallel to each other. Now n cap is perpendicular to plane containing vector A and vector B. That's why vector A cross vector B is perpendicular to plane containing vector A and vector B. This is the most important point. So हम तीनोटी point पाइले. So first this is vector A cross vector B is parallel to n cap. Okay, and vector A cross vector B is perpendicular to both vector A and vector B. Okay, and here vector A cross vector B is perpendicular to plane containing vector A and vector B. Okay, now एबे हम बाहर करबा
b क्रॉस a रो वैल्यूटा कोन आसी हम a क्रॉस b बाहर करले कोन ab sin थीटा n कैप नाउ हम बाहर करबा एबे b क्रॉस a वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a रो वैल्यूटा कोन आसी दिस इज vector a and this is vector b. Okay, now this is n cap. Okay, and let theta is the angle between vector a and vector b. B cross a means what? आमे b to start करिकी वेक्टर a पर्यंत क्रॉस करबा तो b to start करिकी वेक्टर a पर्यंत जदि आमे क्रॉस करले ताहले हमर ए थंब रो डायरेक्शन टा जते हम कर्ल करूची ए थंब रो डायरेक्शन टा कोन होची थंब रो डायरेक्शन टा एही ग्रीन बोर्ड रो बैकवर्ड डायरेक्शन रे जाउची ओके दिस इज b क्रॉस a ओके दिस इज b क्रॉस a तो हमर थंब रो डायरेक्शन टा कोन हबो बैकवर्ड डायरेक्शन रे जीवो तो ताको हम तो डायग्राम रे देखै पारिबानी सो हम कोन करबा यार जस्ट डाउनवर्ड रे ड्रा करबा n के ऊपर जस्ट ऑपोजिट तो n के ऊपर जस्ट ऑपोजिट ये कोन हो जीवो माइनस n के हो जीवो ओके नाउ b टू हमें जते बेले a पर्यंत क्रॉस करबा दैट इज b क्रॉस a रो वैल्यू रो डायरेक्शन टा कोन हबो माइनस n के हबो सो b क्रॉस a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b into magnitude of vector a okay sin theta into minus n cap okay now आमे आको लिखि परिबा ba को लिखि परिबा ab sin theta अब माइनस n cap जो अछि माइनस हम फ्रंट दे देले दिस इज n cap यार मीनिंग ता कोन दिस इज minus of a cross b minus of a cross b so b cross a equal to minus of a cross b हमें डॉट प्रोडक्ट रे पढि दिले कोन डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव दैट मींस a डॉट b इक्वल टू b डॉट a करूथिले बट क्रॉस प्रोडक्ट बिकॉज़ इट इज ए वेक्टर ओके यार डायरेक्शन ता कोन होची ऑपोजिट डायरेक्शन रे रहउची a क्रॉस b रो डायरेक्शन ता माने फॉरवर्ड डायरेक्शन रे आसी आ b क्रॉस एरो डायरेक्शन ता बैकवर्ड डायरेक्शन रे जाउची सेति पय एरो डायरेक्शन डिफरेंट सो हमें a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a कहि पारिबानी ओके a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a बट a क्रॉस b इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a हबो ओके सो दिस इज अनदर पॉइंट नाउ हमें यदि वेक्टर a और वेक्टर b यदि जीरो वेक्टर हो जाए वेक्टर a और वेक्टर b यदि जीरो वेक्टर हो जाए ताहले थीटा इज डज नॉट डिफाइंड ओके थीटा इज डज नॉट डिफाइंड देन वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b केते जीवो दिस इज जीरो वेक्टर ओके वेक्टर a किमा वेक्टर b यदि जीरो वेक्टर हो जाए ताहले यार आर्बिट्रेरी डायरेक्शन रहि जीवो जे कोनसी गोटे वेक्टर आर्बिट्रेरी डायरेक्शन रहि गेला हम थीटा टा डिफाइन करि पारिबानी सेति पय सही केस रे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b टा हिजबो केते जीरो वेक्टर ओके नाउ next cross product of two collinear vector और parallel vector ओके और parallel vector
दुईटी वेक्टर कोलिनियर किंबा पैरेलल यदि हेतिबे ताहले तार क्रॉस प्रोडक्ट ता कोन हो ओके तो कोलिनियर और पैरेलल केते बेले हुए if theta equal to 0 डिग्री और theta equal to 180 डिग्री तो केस 1 होची कोन theta equal to 0 डिग्री तो थीटा इक्वल यदि 0 डिग्री हबो ताहले हम ताको कोन कहबा लाइक वेक्टर कहबा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज लाइक वेक्टर ओके ताहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी sin 0 डिग्री into n cap ओके ए बी sin 0 डिग्री into n cap ताहले sin 0 डिग्री होले 0 so 0 into something 0 and 0 into n cap it is given by 0 vector okay so vector a cross vector b केते हला 0 vector this is two vectors are what collinear or parallel so in mutually perpendicular component this is I cap, J cap and K cap यदि हमें I cap cross I cap बाहर करिबा this is magnitude of I cap into magnitude of I cap cos sin 0 degree into n cap and here magnitude of this is 1 1 okay and here this is equal to what 0 vector okay similarly j cap cross j cap equal to 0 vector k cap cross k cap equal to 0 vector okay now जदि मु के सेकंड टा कोन हो दिस इज थीटा इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री थीटा इक्वल टू 180 डिग्री गेले कोन होइबे दिस इज अनलाइक वेक्टर्स ओके एंड इन दिस केस आल्सो 0 वेक्टर होबो ए बी sin 0 डिग्री इनटू n के केते होबो 0 वेक्टर होबो सो दुईटी वेक्टर यदि पैरेलल थिबे किंबा कोलिनियर यदि थिबे ताहले तांकर क्रॉस प्रोडक्ट ता सब बेले केते हबो नल वेक्टर हबो ओके नाउ यदि मु वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a बाहर करे यार दुई अंतर एंगल होची 0 बिकॉज़ दे आर पैरेलल ओके सो 0 वेक्टर यदि वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b बाहर करे इट इज 0 वेक्टर suppose vector c cross vector c equal to 0 vector same vector सहित यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट बाहर करबा तारो रिजल्ट सब बोले कोन होबो गोटे नल वेक्टर होबो ओके नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर दुईटी वेक्टर जदि परपेंडिकुलर हेतिबे जदि थीटा टा जदि 90 डिग्री हेतिबो ताहले वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b it is equal to magnitude of a magnitude of b sin 90 degree into n cap okay and it is equal to ab sin 90 degree value 1 and this is n cap okay so it is given by ab n cap here n cap is the unit vector which is perpendicular to both vector a and vector b now यदि हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट केस रे नबा दिस इज I cap this is J cap and this is K cap okay so मो यदि I cap क्रॉस J cap यदि बाहर करेबी ताले कोन हबो मैग्नीट्यूड ऑफ I cap इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ J cap एंगल अछि 90 डिग्री ओके एंड n cap
Here n cap is the unit vector perpendicular to I cap and j cap. Okay, n cap is the unit vector perpendicular to I cap and j cap. This is 1, this is 1, and this is also 1 into n cap. So it is n cap. But according to right hand system, if we cross I cap to j cap, okay, the direction of thumb gives the direction of k cap, and here k cap is the only one unit vector which is perpendicular to I cap and j cap. Okay, now this n cap is given by what? K cap. Okay, j cap cross k cap equal to, this is magnitude of j cap, magnitude of k cap sine 90 degree into n cap, and this is equal to n cap, and if we cross j cap to k cap, okay, the thumb will be gives the direction of what? I cap. Okay, the thumb will gives the direction of what? I cap. Now this is I cap. आमे जेतेबेले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे जीवा, this is I cap, j cap and k cap. जेतेबेले आमे एंटी क्लॉकवाइज रे जीवा, ये प्लस हबो, this is I cap cross j cap k cap हबो, j cap cross k cap I cap हबो, आ गोटे रहिला कोन k cap cross I cap equal to j cap हबो. ओके, अब हमें जेतेले क्लॉकवाइज सेंस रे जीवा, this is क्लॉकवाइज रे गले कोन जीवो माइनस रे जीवो. ओके, this is I cap cross j cap. हमें जदि आपको लिखिबा j cap cross I cap. ओके, j cap cross I cap. जदि क्रॉस प्रोडक्ट ता जदि हमें चेंज करबा, वेक्टर पोजीशन जदि चेंज करबा, ताहले कोन हो जीवो j cap cross I cap equal to minus of I cap cross j cap, and it is equal to what? Minus k cap. Now k cap cross j cap equal to minus I cap, and I cap cross k cap equal to minus j cap. Okay, जेतेला में एंटी क्लॉकवाइज रे जीवा, I cap cross j cap k cap हबो, j cap cross k cap I cap हबो, k cap cross I cap j cap हबो. जेतेला क्लॉकवाइज जीवा j cap cross I cap है जीवो माइनस k cap. ओके, I cap cross k cap है जीवो माइनस j cap, k cap cross j cap है जीवो माइनस I cap. Okay, so this is all about cross product of two collinear vector and cross product of two perpendicular vector. Now properties of cross product. Properties of cross product. The first time the coordinate cross product is not commutative. Cross product is not commutative. Okay, that is vector A cross vector B is not equal to vector B cross vector A, but vector A cross vector B equal to minus of vector B cross vector A.
Okay, now cross product is distributive over vector addition. Cross product is distributive over vector addition. This is vector A cross vector B plus vector C को हमें लिखि परिबा vector A cross vector B plus vector A cross vector C और vector B plus vector C cross vector A को हमें लिखि परिबा vector B cross vector A plus vector C cross vector A. Okay, now move to properties number 3. Cross product is associative. Cross product is associative with a scalar. Okay, यदि हमें m को यदि गोटे स्केलर नहीं दिबा, ओके, यदि हमें वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B यदि बाहर करूची m, हियर m इज ए स्केलर, तो हम या को लिखि परबा कोन m इनटू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B भी लिखि होबो और वेक्टर A क्रॉस m into vector B भी लिखि होबो. If m is a scalar, then m into vector A cross vector B को लिखि होबो कोन m into vector A cross vector B किंबा vector A cross m into vector B. यदि m और n यदि दुईटी स्केलर हो, ओके, if m and n यदि दुईटी स्केलर एटा गोटे गला आ गोटे अछि यदि m और n दुईटी स्केलर एंड वेक्टर A एंड वेक्टर B यदि दुईटी वेक्टर ताहले m into n वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B m और n दुईटी स्केलर मल्टीप्लाई हेछि ताहले वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B सहित यदि मल्टीप्लाई हो आमे को लिखि परिबा m into वेक्टर A क्रॉस n into वेक्टर B लिखि हो आ अगेन या को लिखि परिबा हमें n into वेक्टर A cross m into वेक्टर B. Okay, so this is all about properties of cross product. Okay, so आज हम इन क्लास रे पढ़ले कोन that is introduction of cross product and cross product of two collinear vector and cross product of two perpendicular vectors and some properties of cross product. Okay, so next class रे या पर जो कंटेंट अछि ता विषय में डिटेल्स रे पढ़िबा. So till that, take care and thanks to all of you.